Hello everyone and welcome to Mentor's Galaxy. I am Pratiksha Roy, your chemistry mentor. The topic of today's discussion is limiting reagents. In our last videos, we discussed about stoichiometry. हमने stoichiometry के definition के बारे में पढ़ा and we saw some calculations pertaining to stoichiometry. उसमें सबसे important था single reactant stoichiometric calculation, where the amount of one reactant is known to us and using that we were finding out the amounts of other reactants and the products. बट उस वीडियो में हम एक टॉपिक में अटक गए थे कि अगर हमको दो रिएक्टेंट्स के अमाउंट्स पता हो बट द अमाउंट्स आर नॉट इन द एग्जैक्ट रेशियो, तो तब हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे. To solve that problem, we will discuss the concept of limiting reagent today. That problem will be solved by using the concept of limiting reagent. So let us begin today's discussion. तो पहले हम ये देख लेते हैं कि limiting reagent क्या होता है. What is limiting reagent? Sometimes a reactant may be given in a much larger quantity than the amount required by the balanced chemical reaction. Balanced chemical reaction से हमें जो मोल रेशियो मिलता है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक रिएक्टेंट हमको उससे कहीं ज्यादा अमाउंट में दिया गया है. But the reactant that is present in the least quantity is consumed first, after which further reaction cannot proceed. इस रेशियो में जो क्वांटिटी सबसे लीस्ट होगी, जिस रिएक्टेंट की क्वांटिटी सबसे लीस्ट होगी, वो रिएक्टेंट सबसे पहले खत्म हो जाएगा. एंड इफ दैट रिएक्टेंट इज फुल्ली कंज्यूम्ड, फर्दर रिएक्शन कैन नॉट प्रोसीड. इसके बाद रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं करेगी. सो इफ वी आर गिवन अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट इन एक्सेस, then the reactant that will be present in the least quantity will be consumed first. This is simple logic. अगर हमारे पास कोई चीज कम होती है, कोई ingredient कम होती है, तो वो पहले ही खत्म हो जाती है. And if it gets consumed totally, then the further reaction cannot proceed. Such a reactant which is present in the least amount limits the formation of products and it is known as the limiting reagent. मतलब जो रिएक्टेंट हमारे लीस्ट अमाउंट में होगा प्रेजेंट इन आवर रिएक्शन, दैट विल लिमिट आवर रिएक्शन. मतलब जो रिएक्टेंट सबसे कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा वो सबसे पहले खत्म हो जाएगा, और अगर वो रिएक्टेंट खत्म हो गया तो रिएक्शन और फर्दर प्रोसीड नहीं करेगी, इसलिए वो रिएक्शन को लिमिट कर रहा है. एंड सो इट इज नोन एज द लिमिटिंग रिएजेंट. The excess quantity of the other reactant remains unreacted at the end of the reaction. जो दूसरा रिएक्टेंट होता है वो एक्सेस क्वांटिटी में अगर रहेगा तो वो बच जाएगा. इट विल जस्ट रिमेन अनरिएक्ट एट द एंड ऑफ द रिएक्शन. लेकिन अगर लिमिटिंग रिएजेंट खत्म हो गए तो और रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगी. सो दिस इज आवर कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट. We have to see the reactant which is given to us in the least amount, and that will be our limiting reagent that will determine how much products we will get. लास्ट वीडियो में मैंने स्टोइशियोमेट्री को एक रेसिपी के साथ कंपेयर किया था कि स्टोइशियोमेट्री इज लाइक अ रेसिपी फॉर अ केमिकल रिएक्शन. तो लिमिटिंग रिएजेंट को आप ऐसे समझ सकते हो कि इट इज एन इंग्रेडिएंट ऑफ योर रेसिपी विच इज प्रेजेंट इन द लीस्ट अमाउंट. आप कुछ डिश बना रहे हो, उसमें से एक मेन इंग्रेडिएंट सबसे कम अमाउंट में है. अगर वो इंग्रेडिएंट आपका खत्म हो गया, बाकी जितने भी सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, आप डिश और ज्यादा नहीं बना पाएंगे. The amount of ingredient which is present in the least amount will determine the amount of your dish that you are making. So this is what is limiting reagent. The reactant which is present in the least amount is the limiting reagent. तो हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. Let this be a balanced equation. तो हमने सीखा था कि पहले हमको मोल रेशियो निकालना है. So 3:1 is our mole ratio of the reactants and they will form the product in the ratio of 4:2. So इस रेशियो को हम चेंज कर सकते हैं. ये 6:2 हो सकता है, ये 8:4 हो सकता है. अगर हम कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते रहे तो इसका भी मोल रेशियो चेंज होगा, बट द रेशियो विल ऑलवेज रिमेन द सेम. नाउ सपोज वी आर गिवन द रेशियो ऑफ 30:10.
तो इट इज इन द एग्जैक्ट रेशियो। अगर हम पूरे रेशियो को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 30 होगा, यहाँ पे 10 होगा, so it will be 40:20. So this is an exact amount, exact ratio में हमको दिया गया है. But what if we are given 30:20 ratio? What will happen then? So we are seeing कि if we take 30 amount of A, we will need 10 amount of B. तो यहाँ पे कितना है 30:20, मतलब अगर 30 A चाहिए तो सिर्फ 10 B चाहिए. जो एक्स्ट्रा हमको और 10 दिया गया है, 20 इज बेसिकली 10 + 10. तो इसमें से सिर्फ ये जो 10 है वही रिएक्ट करेगा 30 के साथ, because after that this 30 will be consumed and this 10 will remain unreacted. So in this case A will become our limiting reagent because A is limiting our reaction. क्योंकि 30 जो है वो पूरा कंज्यूम हो रहा है और उसके बाद द रिएक्शन विल स्टॉप. यहाँ पे जो 20 है उसमें सिर्फ 10 A के साथ रिएक्ट करेगा एंड द 10 विल रिमेन अनरिएक्टेड. सो अगर हम 30:20 के रेशियो में ले इस रिएक्शन को स्पेसिफिकली, देन A will become our limiting reagent. So now we can see that we can make B also our limiting reagent. Again we will write 3:1. Now suppose we are taking a ratio of 40:10. एक्चुअली में 10 के लिए कितना चाहिए होगा हमको? 30:10 चाहिए होगा. Then only it will give us 40:20. But in this case we are given 40 amounts of A. लेकिन हमको चाहिए तो सिर्फ 30. So 40 को we can write as 30 plus 10. So for this 10 amount of B, only 30 amount of A is required. ये जो extra 10 amount of A है that will remain unreacted. But हमारा जो B component है उसका पूरा ही ये 10 amounts exhaust हो जाएगा and after that the reaction will not proceed because ये पूरा consume होके खत्म हो जाएगा. So in this case we see that B is our limiting reagent. मतलब जो रिएक्टेंट कम अमाउंट्स में प्रेजेंट होगा वो पहले खत्म हो जाएगा, दैट विल लिमिट आवर रिएक्शन. सो इन दिस केस इट इज बी. इन द लास्ट केस इट वाज ए. सो फॉर द सेम रिएक्शन अगर हम अमाउंट्स को वैरी करेंगे, मोल रेशियो को वैरी करेंगे तो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट भी वैरी होगा. वी हैव टू सी द लीस्ट अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट दैट इज प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू द रेशियो. इन दिस रेशियो 30 के लिए हमको 10 जरूरत थी बट यहाँ पे 20 दिया गया है. So A is our limiting reagent. So I hope the limiting reagent concept is clear with these two examples. मतलब एक same reaction के लिए A भी आपका limiting reagent हो सकता है, B भी आपका limiting reagent हो सकता है, depending upon their amounts that are given to you. So now we will see the stoichiometric calculations based on limiting reagents. कि अगर limiting reagent दिया गया है तो तब हम stoichiometric calculations कैसे करेंगे? So there are some rules. Similar steps are followed in stoichiometric calculations based on limiting reagent. जब stoichiometric calculations हम जैसे करते आए हैं वो same steps followed होंगे. Calculations are done on the basis of single reactant procedure, but the reactant that has to be considered is the limiting reagent. यही हमको ध्यान में रखना है कि जो सिंगल रिएक्टेंट यूज करके हम अपने कैलकुलेशंस करेंगे वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट ही होना चाहिए. If we take the other reagent, we will not get our correct answer. So for the calculations, we will use the single reactant procedure only, but the single reactant has to be our limiting reagent. The limiting reagent has to be identified among all the reactants. जो भी reactants हमको दिए जाएंगे उसमें से हमको limiting reagent को identify करना होगा and using the limiting reagent we will do our calculations. So now let us see some examples. We will see that same question which we stopped at the topic of stoichiometry earlier on. What is the mass of carbon dioxide produced when 12 grams of carbon reacts with 16 grams of oxygen? तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के मास के बारे में हमको पता करना है. So the reaction is very simple. C plus O2 gives CO2.
we all know. So if we see the mole ratio, 1 mole of carbon reacts with 1 mole of oxygen to produce 1 mole of carbon dioxide. So the mole ratio is also all right from here this statement. So 1 मोल कार्बन का मास होगा 12 ग्राम and 1 मोल O2 का मास होगा 32 grams. So 12 gram of carbon will react with 32 gram of oxygen to give us 44 grams of carbon dioxide. If you find the mass of carbon dioxide for 1 mole, it will come to 44 grams. So this statement is also correct. But अभी हमको क्या पता करना है? 16 ग्राम ऑक्सीजन है and यहाँ पे 12 ग्राम कार्बन है. So let us see for 16 gram of oxygen how much carbon we require. So for 16 gram of oxygen, we will just simply divide 12 by 32 because यहाँ पे हम कार्बन का निकाल रहे हैं. So we will just put unitary method 12 by 32 into 16 grams of carbon will give us 6 grams of carbon. Now let us see in our question we are given 12 grams of carbon. So in our question carbon is given in excess. कार्बन का जो अमाउंट है वो ज्यादा दिया गया है मोर देन द मोल रेशियो दैट इज रिक्वायर्ड. 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन के लिए हमको 12 ग्राम कार्बन लगता था. So 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के लिए हमको 6 ग्राम ऑफ कार्बन चाहिए. बट वी आर गिवन 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन. तो हमारा कम कौन सा रिएक्टेंट है? आवर लिमिटिंग रिएजेंट इन दिस केस इज नाउ ऑक्सीजन. So oxygen is the limiting reagent in this reaction and we will use the data of oxygen to finish our calculations. So 32 grams of oxygen produces 44 grams of CO2. From this line we see 1 mole, 1 mole. So 32 grams of oxygen will give us 44 grams of carbon dioxide. So 16 grams of oxygen will give us, again, simple unitary method, 44 by 32 into 16. So if we just cancel it, we will get 22 grams of carbon dioxide and this is our final answer. अगर हम 12 ग्राम कार्बन को लेकर ये कैलकुलेशन कंप्लीट करते तो वी वुड हैव गॉन अ डिफरेंट आंसर. हमको 22 ग्राम्स ऑफ कार्बन नहीं मिलता. बट वी हैव टू डू द कैलकुलेशन विद द यूज ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट. ऐसे कैलकुलेशंस में हमको लिमिटिंग रिएजेंट पहले आइडेंटिफाई करना होगा विच वी आइडेंटिफाइड फ्रॉम दीज स्टेप्स and then we just use the limiting reagent data to finish our calculations. So I hope this question is clear to you all. This is the question that we left at the stoichiometry chapter. So we have now solved it using our knowledge of limiting reagent. Let us see one more question. This was question number 1. So now we will go to question number 2. Dihydrogen and dioxygen react with each other to produce water. Hydrogen, oxygen and water. This is a balanced reaction. Calculate the mass of water produced if 2 kg of dioxygen reacts with 1 kg of dihydrogen. मतलब mass of water हमें यहाँ पे निकालना है, amount of water. Will any of the reactants remain unreacted? If yes, which one and what would be its mass? मतलब यहाँ पे क्या कोई reactant excess amount में दिया गया है? अगर है तो कितना excess है? तो हमारे question के 3 parts हैं. And it is evident that we have to check whether we have a limiting reagent in this reaction. So let us proceed with the calculations. ये है हमारा balanced equation. So mole ratio is 2:1 and it will give us 2. So 2 moles of hydrogen reacts with 1 mole of oxygen to produce 2 moles of water. This statement is all right. So for 2 moles of hydrogen, the mass will be 2 grams. 1 mole of oxygen mass will be 32 grams and 2 moles of water mass will be 36 grams. For 1 mole of water it is 18 grams. 16 plus 2. एक ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का एक होता है 2 हाइड्रोजन, so 16 plus 2. So 1 मोल का होता है 18 ग्राम, 2 मोल्स का होता है 36 ग्राम. So this line is also okay. Now in our question it was given 2 kilos of dioxygen and 1 kilo of hydrogen. So if 2 grams of hydrogen required 32 grams of oxygen, then 1000 gram of hydrogen, 1000 gram is basically what? It is 1 kg, which is given in our question. It will require what? How much amount of oxygen?
Simple unitary method again, 32 by 2 into 1000 gram of oxygen. If we just cancel it, we will see that we will get 16,000 grams of oxygen, which is 16 kg of oxygen. मतलब 1 किलो ऑफ हाइड्रोजन के लिए हमें 16 किलोज ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन हमारे क्वेश्चन में सिर्फ 2 किलो ऑक्सीजन दिया गया है. मतलब ऑक्सीजन इज अगेन द लिमिटिंग रिएजेंट फॉर दिस रिएक्शन, क्योंकि 1 किलो के लिए हमें 16 किलो ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन हमारे क्वेश्चन में सिर्फ 2 किलो ही दिया गया है. मतलब आफ्टर 2 किलोज ऑफ ऑक्सीजन रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी एंड सिर्फ हाइड्रोजन अनरिएक्टेड रह जाएगा. So dioxygen is our limiting reagent in this reaction. So now we will do our calculation using the value of oxygen, using the data of oxygen, which is 2 kgs. 32 grams of oxygen produces 36 grams of water. So 2000 gram, which is again 2 kg basically. 2 kgs of water, oxygen will produce how much water? Again, we'll just divide simple unitary method, 36 by 32 into 2000. अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, सिंपल कैंसिल करते जाएंगे, तो वी विल गेट 2250 grams of water. This is our final answer. So this answer we reached. Why? Because we used the data of limiting reagent, which is oxygen in this case. So for such reactions, always we need to calculate using the limiting reagent. We have our final answer for our first question. The mass of water which will be produced will be 2250 grams of water. So we have two more parts to this question. कौन unreacted रहेगा? Obviously dihydrogen will remain unreacted. 1 kg of dihydrogen required 16 kgs of oxygen, but we are given only 2 kgs of oxygen. So the 2 kg of oxygen will require some amount of hydrogen and the rest will remain unreacted. So we will find out that how much dihydrogen will remain unreacted. So dihydrogen remains unreacted in this reaction with the given conditions. मतलब जो conditions question में हमको दिया गया है उस हिसाब से dihydrogen will remain unreacted. So 1 mole of oxygen reacts with 2 moles of hydrogen. From the balanced equation we can see. So for 2 kg of oxygen, how much hydrogen we need? Again, simple unitary method, we will just divide. And if we see that, then we will get 125 grams of hydrogen. हमको question में दिया गया था 1 kilo, which is basically 1000 grams of hydrogen. But in reality, for 2 kgs of oxygen, we need just 125 grams of hydrogen. So the mass of dihydrogen that will remain unreacted is 1 kg minus 125 gram. 1000 minus 125, which is 875 grams of hydrogen will remain unreacted. So 2 kilo हमारा limiting reagent था ऑक्सीजन का, उसके लिए हमको required है 125 grams of hydrogen. But उसकी जगह पे हमको दिया गया था 1 kilo. So the remaining amount which will not react will be 875. We have just found it out by simple subtraction. So this was a question जहाँ पे हमने पहले amount of प्रोडक्ट कैलकुलेट किया, कौन सा रिएक्टेंट अनरिएक्टेड रहेगा ये फाइंड आउट किया, एंड कितना अनरिएक्टेड रहेगा वो भी हमने यहाँ पे लास्ट में निकाल दिया. सो नाउ वी विल मूव टू अनदर क्वेश्चन. दिस इज अ JEE क्वेश्चन फ्रॉम 2019, 9th April shift 1. So let us see what this question says. For a reaction, nitrogen plus hydrogen will give you ammonia. It is a balanced reaction. We will have to check if the reaction is balanced or not. Very important. It is balanced already. Identify dihydrogen as a limiting reagent in the following reaction. मतलब इन reactions में कौन से reaction में dihydrogen limiting reagent रहेगा वो हमको पता करना है. So we are given 4 options with nitrogen and hydrogen, and let us solve and see कि इनमें से कौन से option में हमारा hydrogen limiting reagent रहेगा. So 1 mole of nitrogen reacts with 3 moles of hydrogen to produce 2 moles of ammonia. ये हमको पता चल रहा है इस रिएक्शन से 1 mole, 3 moles and 2 moles.
the mole ratio is clear. 1 mole of N2 का मास होता है 28 grams, 3 moles of hydrogen का मास होता है 6 grams and 2 moles of ammonia का मास होता है 34 grams. You can easily calculate and check if the masses that I have written are correct or not. I am assuming कि मैंने सही लिखा है, वरना पूरा आंसर ही गलत निकल जाएगा. But you should check if I have written everything correctly. The masses of nitrogen, hydrogen and ammonia related to the moles of course. 3 मोल का मास है ये, 1 मोल का मास है एंड अगेन 2 मोल का मास यहाँ पे है. तो हमारे पहले ऑप्शन में था 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन. So if 28 gram of nitrogen reacts 6 grams of hydrogen, then 56 gram of nitrogen will require, again simple unitary method, 6 by 28 into 56. So let us try to solve this one. 7 से यहाँ पे डिवाइड करते हैं पहले. 6 को हम रहने देते हैं. Okay. So we will get 12 grams of hydrogen. So for 56 gram of nitrogen, we require 12 gram of hydrogen. Next option, 35 grams of nitrogen. So again, simple unitary method we will do. So again, we will divide by 7, which will be 5. This will be 4. 15 by 2, which will be 7.5 grams of hydrogen. So for 35 gram of nitrogen, we require 7.5 gram of hydrogen. Next two options, let us see. 14 gram of nitrogen के लिए, again, 6 divided by 28 into 14. Let us see what will be the answer. P. So for 14 grams of nitrogen, we require 3 grams of hydrogen. And lastly, we have 28 grams of nitrogen. So यहाँ पे हमको दिया ही गया है, but if you do the unitary method also, it will just cancel out and we will get 6 grams of hydrogen. So एक बार recap कर लेते हैं. 56 ग्राम नाइट्रोजन के लिए 12 ग्राम हाइड्रोजन, 35 ग्राम के लिए 7.5, 56 के लिए 14 ग्राम के लिए 3 ग्राम्स एंड 28 ग्राम्स के लिए 6 ग्राम्स. ओके. सो 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन के लिए हमको कितना चाहिए था? एक्चुअली 12 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन. 35 ग्राम के लिए हमको चाहिए था 7.5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन. 14 ग्राम के लिए हमको चाहिए था 3 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 28 ग्राम के लिए चाहिए था हमको 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन. दिस इज द एग्जैक्ट रेशियो. तो ये ऑप्शन हमारा कैंसिल है. ये एग्जैक्ट अमाउंट में दिया गया है. 28 ग्राम के लिए 6 ग्राम्स ही हमको चाहिए. नाउ वी विल सी दिस वन. ये भी ऑप्शन कैंसिल है क्योंकि हमें 3 ग्राम्स चाहिए, यहाँ पे 4 ग्राम्स दिया गया है, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन एक्सेस अमाउंट में है. सो दिस इज नॉट द लिमिटिंग रिएजेंट. Similarly, for this one, we require 7.5, but we are given 8 grams. So it is an excess amount. So our final answer will be our option A, जहाँ पे हमको चाहिए तो 12 grams of hydrogen, but in the question we are given only 10 grams of hydrogen. So in this reaction only, hydrogen is the limiting reagent, which was asked in our question कि कौन से reaction में hydrogen हमारा limiting reagent रहेगा. तो it is the option A. हमको 12 ग्राम चाहिए था, लेकिन हमको दिया गया है सिर्फ 10 ग्राम. सो इन दिस केस, इन द फर्स्ट रिएक्शन व्हिच इज ऑप्शन ए, hydrogen will be the limiting reagent. So our correct answer is option A. So I hope this question was clear to you all. This had come in your previous year JEE main paper. So this is a very important question and very relevant to the topic that we are trying to discuss today. So the last question, this is from NCERT books. If you check the book, check the first chapter, which is some basic concepts in chemistry, you will find this question in the question section. In a reaction A plus B2 gives AB2, identify the limiting reagent in the following mixtures. कौन सा limiting reagent रहेगा इन दोनों में से? We have to identify. So very simple, the mole ratios are 1:1. The product they will also give in 1. So the mole ratios are all 1.
तो अगर 1 रेशियो हुआ तो इसके जितने एटम्स रिएक्ट करेंगे उसके उतने मॉलिक्यूल्स ही रिएक्ट करेंगे. दिस इज एन एलिमेंट, दिस इज अ सिंगल एलिमेंट, सो वी विल कंसिडर एटम्स. दिस इज अ कंपाउंड, सो वी विल कंसिडर मॉलिक्यूल्स. तो अगर इसका एक एटम रिएक्ट करेगा तो उसके साथ इसका एक ही मॉलिक्यूल रिएक्ट करके इसका एक मॉलिक्यूल Ab2 बनेगा. Ab2 इज अगेन अ कंपाउंड, so we will use the term molecules instead of atoms. So this will be atoms and this will be molecules. This will also be molecules. So 300 atoms of A and 200 molecules of B. So 300 atoms of A के साथ हमको 300 molecules of B2 ही चाहिए. यहाँ पे B2 होगा सब में. But we are given only 200 molecules of B2. So for 200 molecules of B2, we need 200 atoms of A only, but we are given 300. So A is in excess. So in this case, हमारा B2 और B will be our limiting reagent. तो ऐसे ही एक मोल के साथ एक मोल करना चाहिए, यहाँ पे दो मोल के साथ दो मोल करना चाहिए था, बट यहाँ पे 3 moles दिया गया है. So this is an excess. So for this reaction, A will be our limiting reagent. These three I will keep as homework. This is very easy because the ratio is very simple. It is 1:1 ratio. And I have solved the first two ones. They follow a similar logic according to the first two ones. So I hope कि ये तीनों भी आप आराम से solve कर पाएंगे because it is very easy. So I would like you to try it and let me know in the comments कि आपको कैसे answers मिले regarding question number 4, parts 3, 4 and 5. I will keep this as your homework so that you can also understand and apply what you have understood in the concept of limiting reagent. So I hope this lesson was informative to you. I hope कि stoichiometry का जो सवाल हम solve नहीं कर पा रहे थे वो इस concept से अब आप solve कर पाएंगे. Stoichiometry and limiting reagent are very important topics which come both in your school exams and obviously in your competitive exams. We just saw an example of JEE main paper where a direct question from limiting reagent came. It was a very easy question and अगर आप उस question को सही से solve कर पाए तो आपके marks पक्के हैं. So the topic of stoichiometry and limiting reagent are very important and I hope with all our discussion that we have done of these two chapters, these two topics, I hope these topics are now clear to you. So at Mentor's Galaxy, you will get regular classes and some engaging content via shorts and reels. And most importantly, we will have problem solving sessions to clear your doubts. Please subscribe our YouTube channel and follow our Instagram page for more updates. Stay tuned to our channel for more such informative videos, not only on chemistry, but on all the other subjects that we also offer. Thank you so much.